your name, all of the gurus, all of the Eastern teachers that have come from the 60s up, they have these very amazing names. Officially, you're Shiva Balayogi Maharaj. What does I know what Shiva is. What does this mean, this name, your name? स्वामी जी के नाम का अर्थ क्या है? शिवा शंकर भगवान, बाला पार्वती, योगी हम, महाराज पब्लिक प्रजा गुरु. Okay. You want me to? Yes, please. I think I knew the Baha was poverty. Is that right? No, Shiva is Shankar Bhagwan, Yes. Lord Shiva. The destroyer. Parvati is Bala. the goddess. Shiva, Lord Shiva's consort. Consort. Yes. Okay. And Yogi is Swamiji himself. And Maharaj Guru. And Maharaj means the Guru, the preceptor. The preceptor. So in you, the male and the female, Shiva and his consort or her consort, are dancing light and goodness. And बोलता है कि ये स्वामी जी में अर्धनारीश्वर. Yes. Yes. अभी हमारा देह में गोड़ा अर्धनारीश्वर है. That in Sanskrit is called Ardhanarishwar. Means half man, half woman. So Swamiji personifies this aspect. Swamiji, in your own personal life, what part did pain and suffering play in your road to enlightenment, if I can ask it that way? Did you suffer? स्वामी बोलता है कि स्वामी जी के लाइफ में जो दुख या तकलीफ आया वो उससे स्वामी जी जो ज्ञान सिद्धि प्राप्त हो उससे क्या संबंध है? कुछ संबंध है उसका? क्या संबंध है? ये सब टेस्ट है. टेस्ट पैसा में भगवान प्राप्त मिला. Swami says that all these pain and suffering which one has to undergo is a test. God test. It's test from God's side. So if one passes these tests, then one can reach God. What happens if you don't pass the test? What form does the test take? How does God test you? I mean, मतलब भगवान कैसे टेस्ट करता है स्वामी? क्या तरीके में टेस्ट करता है? अभी पढ़ता ना. ये पढ़ता है तुम लोग प्रिंसिपल से लोग ऐसे टेस्ट करते हैं. ऐसे. Like you studied in school, so you had to give examinations. How do your teachers, they tested you? Same way. The same way. Well, I failed in some of them. Fail? No, tapas fail. Is there failure in meditation? Is there failure in the life of meditation में भी failure होता है समझिए. Fail हो जाता है. Yes. What form did it take in your life, if I can ask? Fail. अच्छे तरह अपना रोड अच्छे तरह बैठकर तपस नहीं करता है. दूसरा रोड पकड़ता है. फेल हो जाता है. Swami says if one does not stick to this path of tapas and गुरु कैसे बोला ऐसे करना नहीं है तो if one doesn't obey to the guru and takes to other paths, then one fails. बाद में मल्ली गुरु बुलाकर मल्ली बुलाता है. आदमी मल्ली सेम रोड में आना पड़ता है. Then again guru calls that person who has deviated from this path of tapas, and again after some time he has to follow this same path. The guru puts him on the same path. I see. We talk about his guru who taught him. In America, we're used to individualism and doing things ourselves. Is it possible to meditate successfully without a leader or a guru as guide? बोलता है स्वामी कि बगैर गुरु या भगवान के ध्यान करना हो सकता है, ध्यान हो सकता है? हो सकता है. एक सर्कल आ जाएगा और सर्कल में कौन सा रास्ता में जाना है कुछ मालूम नहीं आएगा. आ टाइम में गुरु की जरूरत होती है. So he says yes, one can meditate, but after some time you will get into a circle, some sort of circle, and then you won't know how to go beyond that. So that is the time when one requires a guru. Otherwise there's no chance. Okay, getting caught in a circle would be? इस सर्कल में आने से क्या अर्थ क्या समझे? सर्कल आने में कितना रोड से और रोड्स में कौन सा रोड जाना है मालूम नहीं है क्या सारा. It's like coming to a roundabout and there are many roads which leads in various directions. आ टाइम में गुरु की जरूरत है ये रोड में जाओ.
So that time a guru is required to show you which road leads to God. All right. As a student of your guru, he's taking care of you. Do you ever experience his humility in failing to point out the right way? I mean, is failure still a part of the guru's life? Is he fallible? Does he make mistakes? Guru. Yes. स्वामी जी बोलता है कि गुरु भी कभी गलती करता है. सच्चे गुरु गलती नहीं करेंगे. A true guru will never make a mistake. Never make a mistake, because he's a manifestation of God. Yes, he is. कि वो भगवान का स्वरूप है स्वामी जी. भगवान के स्वरूप में अपना भगवान का स्वरूप भगवान का आर्डर प्रकार जाता है. Because a true guru follows the orders of God. जिनमें फेल की चांस नहीं. That's why there is no chance of failure. My goodness. Figuratively and literally. Spiritual materialism. As you begin a path of enlightenment, you're filled with a kind of a feeling of power and specialness. Is this a real danger? And what kind of meditative precautionary tale can you make about what goes wrong in meditation? बोलता है कि जब आगे ध्यान में बढ़ता है तो बहुत सारी शक्ति आती है, तो वो मेडिटेशन में या आगे बढ़ने में ये रुकावट पैदा करता है स्वामी. वो कुछ गड़बड़ी आता है. गड़बड़ अहंकार आने में आ जाता है. If one gets an ego, then there are a lot of obstacles. One faces obstacles with the powers and everything. If one पावर उपाय करना नहीं है. So one should not use the powers. सिद्धि आने वाले को पावर उपाय करना. Till one gets the final siddhi, one should not use the powers. Could I make a bargain with a guru and say, I want a particular kind of power and I will do this and that? Is it possible to bargain with God? बोलता है कि गुरु या भगवान से ऐसा मांग सकते हैं कि हमको ये प्रकार की सिद्धि चाहिए, हमको ये इच्छा है. अपना साधन प्रकार चलता है. साधन अपना इच्छा में साधन करना है तो तपस करना है तो आप ही मिल जाता है. Swami says that if you are doing tapas or meditation for that particular purpose, then you will get that only. A question about money. I was one of the things that impressed me right off the bat when I saw the flyer, your flyer, your advertisement for yourself and what you do is that you charge no money. बोलता है कि फ्लायर देखा स्वामी जी का, उसमें देखा कि स्वामी जी कुछ चीज़ के लिए पैसा चार्ज नहीं करते हैं, तो काफ़ी अपने को भगवान का वस्तु दिखाने का पैसे में भगवान नहीं मिलता है. दिखाना में मेरा पैसा भगवान नहीं कर सकता है. पैसे का अर्थ है भगवान का रास्ता में पैसा पकड़ना नहीं है. भगवान के रास्ते में भगवान के पास पहुंच सकता नहीं है पैसा पकड़ना में. Swamiji says that one cannot find God or reach God through money. But how does he support himself? By friends who provide for his. स्वामीजी कैसे सपोर्ट करते हैं अपने आप को कि लोग दान देते हैं? ऑटोमेटिक रास्ता होता है. अभी तुम लोग बुलाए हमको, टीवी निकाल रहे सेम ऐसा आ जाता है ऑटोमेटिक. Comes automatically. They're required. Whatever is required. No साहब जी. There's no ऑटोमेटिक. People come सब and चीज just donate. Like you've called here, Swamiji, for TV program. हम लोग माइंड करने का जरूरत नहीं है बात है. Swamiji doesn't have the anything about money in his mind. He doesn't think about it. माइंड करना में कुछ भगवान का रास्ता में कौन वस्तु को माइंड नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाता है. और नो बोलना கூட आ जाता है. If one is following the path of towards God, then there's no need to think about all such things. Whatever is required comes automatically. I've experienced that. No trouble. Very good.
Would you say then that the gurus that charge a lot of money for their kind of spiritual expertise are on the wrong path? Are they? And the beginning is not yoga. Swamiji says that is business, that is not yoga. It's not yoga, Yeah. even though they say that that's what they're doing. Yes. What Yes. are they doing then? If they're asking us for money, I mean, in the United States, to not charge money is just. बोलता है कि यहाँ पे अमेरिका में लोग पैसे का पूछते हैं तो ये योगा नहीं है स्वामी। लोग नहीं भगवान के पास पहुंच सकता नहीं है लोग बिजनेस वाला। The people who do business, they cannot reach God, they cannot go near God. भगवान के पास पहुंचने का भी पैसा पकड़ने का जरूरत नहीं है। To reach God, there is no need to take money. Okay. Gosh, I wish I was born in the wrong country, I think, really. Money. In meditation, हाँ हम बताएंगे थोड़ा ओपन करेंगे। तुम लोग पैसा कितना पैसा करना है तो कितना भगवान के पास पहुंचता है बोल करके ये लोगों को इंटरेस्ट है। कितना पैसा पहुंचने करना में इकड़ा भगवान में नहीं मिलता है। भगवान मिलता है साधना मेडिटेशन में, साधना प्रैक्टिस करना में भगवान मिलता है। So says here the idea is that if one donates or one gives lot of money, one can move towards God. But it is it's a fallacy. Swamiji says that if one wants to reach God, one has to do sadhana. which is प्रैक्टिकल साधन One करने has में to भगवान do के पास पहुंच practical सकते training. One has to undergo practical training. हैं। गुरु अच्छा तरह under a guru. प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कराना पीपल से। And the real guru is he who trains people. trains people. प्रैक्टिस Yeah. Okay. जिनमें पैसा का बात नहीं है। That's why there's money is not Becomes. required. गुरु का कैसा न मिल जाता है भोजन खाना बोलना। And guru can get his food anyway. नो साथ जिसमें पैसा करने का। There's no need to charge money for that. Very good. अभी तुम आके पानी पिए ना, आटा मेरा पानी पिए। Just like when Swamiji came and you offered water, same way he gets food. आटा मिल जाता है गुरु का। So guru, a real guru gets food like that. नो ट्रबल। No trouble.